एक मिनट यश। Okay, recording has started. Okay, cool. Screen दिख रही है मेरी? हाँ यश। ओके, हाँ कूल। तो अभी लाइक मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ या इंग्लिश में? लाइक किसी like does anyone have any problem with Hindi? I don't think a lot of people have joined, so like I can explain in Hindi in much better way. ये Just थोड़ा speak up वोकल if रहो यार anyone. थोड़ा। भैया फिर हिंदी सही रहेगा अगर ऐसा तो। Okay, cool. किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता दो, वो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देगा। अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। I think someone is okay. No problem. Okay, cool. Just speak up in between if you have any. Okay, तो अभी ब्लॉक साइफर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लाइक मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में हम ब्लॉक साइफर्स यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ब्लॉक साइफर्स क्या होते हैं? तो ब्लॉक साइफर्स बेसिकली जैसे सब्स्टिट्यूशन साइफर्स में हम लास्ट वर्कशॉप में मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर्स में हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिप्लेसमेंट करते हैं, बट ब्लॉक साइफर्स थोड़े से बड़े ब्लॉक्स पे काम करते हैं। जैसे हम बड़े ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड साइज है एईएस का 16 बाइट्स, हम उसको रिप्लेस करते हैं, या फिर 8 बाइट्स जो कि डेस का साइज है। ओके, तो ब्लॉक साइफर्स के बारे में और डिटेल्स वैसे मतलब मैंने काफ़ी सारे लिंक्स डाल रखे प्रेजेंटेशन, तो किसी को वो लिंक्स रेफर करने हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉक साइफर्स का कंस्ट्रक्शन अभी बेसिकली हम डिस्कस करने वाले। तो दो ब्रॉड टाइप की कैटेगरीज हमें मिलती है मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स में, एसपीएन नेटवर्क्स, सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन, और एक फाइस्टल नेटवर्क्स, ठीक है। तो substitution, this is example of feistel networks. So what basically happens is in feistel networks we have multiple repetitions of same type of algorithm. So you all can see my cursor, right? My this plus sign, you are looking at the image, हाँ right? You भैया can देख। see. Okay. So what basically we do in a feistel network, uh, this whole this part involving L naught, R naught, K naught, and F, and this XOR operation. This is XOR operation. So this whole is known as one round of Feistel. Okay, so what we do is basically uh, for the next round, we basically have to get information for the next round. तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट हाफ को हम लेफ्ट हाफ में एज इट इज कॉपी करते हैं, दिस रेड एरो यू कैन सी। ओके, फॉर द ग्रीन एरो यू कैन सी, तो हम लेफ्ट हाफ से राइट हाफ कैसे जनरेट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास हर राउंड में सब कीज होती हैं। तो एज आई हैव मेंशन्ड, we have multiple stages of these steps repeated over and over again. Okay, we have key expansion algorithms, key expansion or key scheduling algorithms we call them. So these generate sub keys. Okay, so what we do is that we process them with some kind of sub keys. Okay, so here in Feistel network we have some function. Okay, this function is different for every cipher. Okay, this is basically one of the common example of Feistel is DES algorithm. Okay, very popular example of is the DES algorithm. So what basically does is this function takes in value of R naught and takes in the key K naught. This function is common at every step. Okay, this only at every step the keys are changing, nothing else is changing. It is the same repetition again and again. So what we do is the function processes in the right half, takes in the key and gives out some value. Okay, uh, then we just simply calculate the XOR it with the left sub half, and then it is just copied into the right part. Okay, so this is basically one round of Feistel. Okay, we just simply carry on repeating it over and over again, and then at the output we receive the cipher text. Okay, so this might be looking very complicated structure to you, but there are several advantages for this Feistel network. You can also implement it in the code, like you can just write a for loop and process it again and again. So what basic advantage of Feistel is that the decryption is also the same. So
what you have to do is that you just need to reverse the order of keys. Like you can see k1, k not k1 up to kn, and then you just have to reverse the key while doing the decryption. Everything is just as it is. You just have reversed here k naught to kn to k naught, and then you can get the decryption from ciphertext to plain text. So that is one of advantage of using Feistel networks. Another advantage is that it is very easy to implement on hardware. Like this DES algorithm is very old. It was created about 30-35 years ago. So at that time we didn't have much fast processor, much fast computers, and to encrypt data, we usually prefer implementing algorithms on hardware. So Feistel is very big advantage. Like you just have to, you know, make a circuit for only a very small segment of round of Feistel, and everything you can just carry on repeating it, just changing the keys. I think uh, 2 years ago in 2020 Udyam, there was a task in iChip in Verilog programming. You had to implement in you have to implement a DES encryption and decryption algorithm. Like if you guys are interested in the hardware implementation of it, you can look at that. Here, then, like DES is very like very much old algorithm, and it was actually broken in about in the year around 1999 or 2000. Some company made a machine to brute force all the keys for DES. So like DES is not very much used nowadays. So what we use is another modern algorithm, AES, Advanced Encryption Standard, which basically uses a substitution permutation network. So this is a very simpler representation of what SPN is. So what we have is we have multiple stages of substitution. Substitution is basically we replace values, and then we have permutation. We shuffle them. Okay, like you can get here, like you have already studied the permutation combination stuff. Okay, and then after every step, after every stage of substitution permutation बार बार रिपीट करके उसके बाद की के साथ हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, मोस्ट कॉमनली जॉर का ऑपरेशंस. ठीक है, तो लाइक यू गाइस हैव एनी डाउट, लाइक फास्ट तो नहीं हुआ, लाइक कंफ्यूजन कोई? जस्ट ओवरव्यू, लाइक मैं कुछ यहाँ पे ये नहीं बोल रहा याद रखना है, जस्ट ओवरव्यू की चीज़ें काम कैसे करती है. यू कैन स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन. ओके, लाइक डू यू हैव एनी डाउट, लाइक एनीवन? नहीं भैया. Okay, cool. So here I have like I have already told about the Feistel network, the similar thing, but just what here is different is that uh, there is a very specific number of bit size. For example, for key we use 56 bits of DES, and for block size of DES is 64 bits, that is 8 bytes. So this is fixed for the DES. Like everything is same as in the Feistel network, just these round numbers and the bit numbers is fixed. You can also make your own ciphers. Like you can maybe change the number of bits, increase the number of round, decrease them, or change this function in between, and you can, you know, just basically make your own cipher. But like it is not recommended to make your own, but you can try making your if you want. um, so as I told, less is not practical to power 56. Like if there are 56 bits, so number of possible bytes you can, number of possible bit strings you can generate is 2 power 56. So this is not a very big number to brute force nowadays with special hardware. Another is AES. So AES also has some. AES is basically the same substitution permutation network. It just arranges the data into columns for easier manipulation. That's it. Um, these are just basically the numbers what we are using in AES. Okay. Uh, and there is one more interesting part I would like to discuss. Um, how many of you are actually using Linux in your PC right now? Just you can raise your hand if you are
if you want to. Okay, I see one hand, two hands. Anyone else using Linux? Like you can try this thing out, whatever I will be demonstrating right now. Okay, so you can lower your hands. uh, I will be sharing my full screen, just a second. Okay, so you can see my full screen, right? Yes. हाँ यस. Okay, cool. So what I would like to demonstrate, like it's not like very big thing. uh, what basically happens is that we don't have true randomness. Like it is a bit, directed towards physics, but nothing is random. We everything you can predict. Like if you have the sufficient amount of information, you can predict anything. So in computer, what we use pseudo random algorithms. What basically we do in pseudo random algorithms, we have some function which is predictable, whose value is predictable after some amount of steps. So we use them, but it is not good for generating cryptographic keys. For example, you are thinking maybe like uh, for example, we are constantly using generating and destroying the keys. uh, as for example, you can see this box, right? Whatever I am opening, you can see this certificate box, right? ये दिख रहा है ना? हाँ हाँ यस दिख रहा है. Yes. हाँ, ओके, तो एक्चुअली ये भी एईएस यूज़ करता है। हाँ, ये मतलब जो हमारे पास एल्गोरिदम है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पहले आरएसए के साथ, ये नहीं, ये सॉरी, ये नहीं, हमारे पास पहले की एक्सचेंज एल्गोरिदम चलते हैं। ओके, यहाँ पे एलिप्टिक कर्व पब्लिक की से हम की एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद आ, हमारे पास यहाँ पे एईएस एन्क्रिप्शन होता है। आई थिंक इट इज रिटन समवेयर, it is not written here. Okay, so basically what we do is perform AES encryption. Okay, so what basically happens is, like हम अभी communicate कर रहे हैं, तो सर्वर के साथ हम एक की एक्सचेंज करते हैं. Like this is some random key, we want to encrypt using this key, and then we use block ciphers or stream ciphers to communicate. ओके, तो वो की कैसे जनरेट होती है? और वो की हमारा पासवर्ड तो है नहीं कि हम उसको कुछ रैंडमली हम टाइप करके हम पासवर्ड जनरेट कर सके, तो वी यूज सूडो रैंडम एल्गोरिदम्स. बट प्रॉब्लम विद सूडो रैंडम एल्गोरिदम्स इज that they are predictable. They need to be cryptographically secure, like you cannot predict them. There is very common algorithm, this MT19937. You can read about this. This is a PRNG, pseudo random number generator, used in Python random library. If you have used, this is predictable. We can predict whatever value it is going to give after some. There is around 625, which is it's a specific number. After 625 values, you can predict whatever value is coming next. So this is not good for generating cryptographic keys. So in Linux, there is a very simple, I don't remember it about Windows, but Linux has a very simple implementation. What it does is collects the environmental noise. For example, you are typing on your keyboard, you are using the touchpad. Okay, there is a network traffic coming and going. There are several modes by which kernel can capture data from your laptop. Okay, so in that way, it is collecting a lot of environmental noises which is very specific to your system, so no one can replicate it. So that way it uses them. Okay, now what I will be doing is demonstrating something. Um there is a file named, you can see my text, you can see the text on my terminal, right? Should I make it larger? Oh yes, yes, yes. Okay, cool. So there is a file named dev random. Okay, so what dev random does is, this basically is the file given by kernel. Okay, so you can interact with this file when you want to read cryptographically secure values. Okay,
but like this should be done only when you certainly require cryptographically secure values. For example, because this is a bit slower. So what I will do is that I will create a file object. Okay, open this file dev random. Okay, I can read any amount from this now. Let's say I am reading 1 byte. Okay, this byte is actually randomly generated and no one can predict it because it is dependent on my laptop's values. Now, like I have read 10 bytes, I can read any number of bytes whenever I want. Okay, so like you guys got it, like how actually cryptographic secure keys are generated in systems. Like anyone has any doubt, like whatever I wrote in this script, whatever output is this, if anyone has any doubt. Okay, like if you don't have any. Next part is padding. Like if it's getting boring, like just tell me, like we can skip some part and go come at it later on. In padding, what happens is that I told you that block ciphers operate on blocks. Like there is a block size of 64 bits. Okay. AES has a block size of 128 bits. Uh, what happens if uh, like if you are encrypting, suppose 120 bits, how will you encrypt it? Like it is operating only on 120 bits. Like it is a function which takes in 128 bits and gives out 128 bits. So how can you give it 120 bits? You will have to do something about that. Okay. So for that we have padding schemes. So what we do is that we add dummy bytes after the data. For example, if you have some data of uh, 20 bytes, okay, and your block size is 16 bytes. This is specific example for AES. Okay, so what you do is you will just simply calculate its remainder with 16. Okay, so you need 4 more bytes to make it a multiple of uh, sorry to just a second. Okay, so like this one is wrongly written. Uh, like I will correct it later on. So what will happen is that like you have 20 bytes. Okay, so now you need to make it a multiple of 16. So just anyone just unmute your mic. Like just tell me what number of extra bytes should I add to 20 so that it becomes a multiple of 16. 12. Okay, so yeah, right. So actually this should be uh, what this should have been is that uh, the value of this okay now okay, so this one is now the correct one. Okay, this is the wrong one. Okay, so we will add particularly 12 bytes to make it a multiple of 16 so that we can give it to our algorithm block by block of 16 blocks each, so we can process it. Okay, so this is known as padding. In AES particularly we use PKCS 7 padding. So what we do is that uh, it is very simple. Like for example, uh, we want, like we were adding 12 bytes. Okay, so what we will do is that we will have actually add 12 times 12. So you all know about the ASCII values. They are ranging from 0 to 255. So we will particularly add a character whose value is 12 in ASCII, and we will add it 12 times. So why is this done? So like why we are repeating same value again and again? We could have just added null bytes, added only zeros. But this is particularly done so that it is reversible. For example, if this thing you are getting right, this is an ASCII character whose value is 16. This is the hex value, uh, 10. Okay, this is how we write it in popular languages. This common representation is used in C, C++, and Python. This similar representations. Okay, so what we do is that we
try to make the padding so that this way, so that it is invertible. We can again regain the original information. Suppose, for example, instead of these s I was having, let's say, uh, instead of 10, I am just adding 00. Okay, 00 and so on. Okay, let's say it is 00. These all, instead of these ones, we all are having 00s, and instead of these two s, we were having 0. Okay, so this is our original data. Okay, and from here to here, we are actually added the padding bits. So how we could have known that these two bytes are not the part of the padding, and they are basically part of the original data. So in order to make it reversible, we follow certain scheme in a padding. We can actually make a lot of scheme. There are a lot of other padding schemes in existence, but this is one of the common padding scheme, PKCS7. There are a lot of standards in PKCS 1 through 15. Some are accepted, some are rejected. So this is what we use. And one more important thing is that even if plain text is a multiple of block length, we will still add those 16 bytes. Like, this is a convention, so we just have to follow it. Okay. And I actually have some demonstrations for you guys right now. You can see my whole screen, right? You can see my code editor. No, Yes, भैया. भैया दिख रहा है. Okay, so here what I told is that in substitution we have S box and P box. This is common term we use for them. So what S box contains is data for substitution. P box contains data for permutation. So I will be substituting. This is a long array. So what does this array contain is that at the 0th index, I will not the index. What I will do is that um, the value at a particular index, I will just replace it. Okay, so if I am getting a 0 byte, okay, 00 hexadecimal 0, I will just replace it by 239. And in the same way, if I am getting a byte whose values is 1, I will replace it with 142. Okay, so that's how substitution will work. So and one more thing, डज एनीवन हियर, लाइक, किसी को ऐसे कुछ डाउट तो नहीं कि ये बी का क्या मतलब है? सबको पता है बी का क्या मतलब होता है? ये जो मैंने बी लगाया है स्ट्रिंग से पहले, कोई ऐसे जिसको नहीं पता हो? बता दे यश, नहीं पता होगा. ओके, तो ये बी एक्चुअली बाइट्स है. तो पाइथन में हमारे पास सी प्लस प्लस से थोड़ा सा अलग है पाइथन. तो उधर क्या होता है, हमारे पास बाइट्स और स्ट्रिंग्स हमारे पास अलग अलग होते हैं. ओके, और सेम होते हैं. यहाँ पे हमारे पास अलग अलग होते हैं पाइथन में. तो पाइथन अलग तरीके से दोनों को प्रोसेस कर रहा है. तो अगर हम सबका टाइप देखें, लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूँ सबके टाइप. तो पहले वाला बाइट्स टाइप है, दूसरे वाला स्ट्रिंग टाइप है, str. तो दोनों में डिफरेंस है. तो अभी हम जो इसमें प्रोसेस जो करेंगे, हम बाइट्स के ऊपर करेंगे. क्यों? क्योंकि बाइट्स बेसिकली एरे ऑफ नंबर्स है, एरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 255. तो फॉर एग्जांपल, if I iterate over it, let's say I am writing this. Okay, I will just simply take every value in text. मैं एक एक बाइट उठाऊंगा पूरे बाइट स्ट्रिंग में से और उसको प्रिंट करूंगा. तो मेरे पास sorry, okay, my index. तो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स आए. ओके, अगर मैं यहाँ पे बाइट हटा दूँ, ओके, तो मेरे पास कैरेक्टर्स आएंगे. तो वो बेसिकली मेरे को एस की वैल्यू दे रहा है सबकी. तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे बाइट्स बनाया, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए. ओके, तो व्हाट आई विल डू इज, मैंने एक आउटपुट स्ट्रिंग बनाया. ओके, तो मुझे आउटपुट स्ट्रिंग में
एक एक वैल्यू को रिप्लेस करना है सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से। ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्स एक, इसमें 0 से 255 सारी वैल्यूज़ के रिप्लेसमेंट्स हैं। ओके, तो मैं आउटपुट में डायरेक्टली वैल्यूज़ ऐड करूँगा इस बॉक्स के एक्स इंडेक्स से। ओके, सो अभी मेरे पास यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड है, तो हम इन वैल्यूज़ को मैं टेक्निकली मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ। सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस रिवर्सेबल होते हैं। हाँ, कोई भी एक वैल्यू रिपीट नहीं होती इसमें। 0 से 255 सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो मैं इसको इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। तो इन्वर्ट करने के लिए कोई बता सकता है कि इन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये एरे दे दूँ और एस बॉक्स दे दूँ, इस एस बॉक्स में जितनी लिस्ट है ये पूरी लिस्ट दे दूँ। तो क्या कोई मेरे को ओरिजिनल वैल्यू दे सकता है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं? बताओ, अगर गलत होगा तो भी चलेगा। हर एलिमेंट को पकड़ के उसका इंडेक्स लिस्ट में अपेंड कर दे इस बॉक्स के थ्रू। राइट, तो लेट्स से मैंने इस बॉक्स इनवर्स एक एरे बनाया। मैं इसको इसका साइज बेसिकली मैं इसका जस्ट यहाँ पे मैं 0 नहीं, मैं यहाँ पे -1 उसमें सारी वैल्यूज डाल रहा हूँ 256 टाइम्स। ओके, मैंने जस्ट उसके अंदर 256 वैल्यूज डाली। सो अब मुझे क्या चाहिए? व्हाट आई वांट इज दैट वन कहाँ पे, इस पहले तो मैं इस बॉक्स में देखूंगा वन कहाँ पे है मेरा। ओके, वन मेरा यहाँ पे है। ओके, तो अब मेरा वन जिस लोकेशन पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ अब, क्योंकि मेरा क्या है यहाँ पे डेटा बेसिकली यहाँ इस जगह की जो वैल्यू है वो वन से रिप्लेस हुई है। ओके, तो व्हाट आई, ओके सो आई थिंक आई शुड हैव ट्राइड फॉर 0। ओके, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, सो ये यहाँ पे 0 है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ डेटा में ये एरे में 0 है। ओके, सो व्हाट दिस 0 विल बी रिप्लेस्ड ओके विद। ओके, तो इस पर्टिकुलर एरे में 0 की जो भी लोकेशन है उसके साथ में मेरे को इस 0 को रिप्लेस करना है। ओके, एरे में जो 0 आया। ओके, तो मैं उसको कैसे रिप्लेस करूँगा? मैं सारे वैल्यूज़ पे एक-एक बार इटरेट करूँगा। व्हाट आई विल डू, मैं इस बॉक्स में ith वैल्यू निकालूँगा। ओके, मैं देखूँगा कि इस बॉक्स में मेरा i जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है। ओके, तो इस बॉक्स में i अगर मैं देखूँगा फॉर एग्जांपल 0, i की वैल्यू 0 आई, सो मैं इस बॉक्स में i देखूँगा। ओके, अब मैं इस बॉक्स में एक्चुअली मैं इस बॉक्स में बेसिकली मैं इस बॉक्स में i की लोकेशन फाइंड करूँगा। ओके, तो इस बॉक्स में i की लोकेशन आएगी। ओके, अब ये लोकेशन जो है, अब ये वाली चीज़ मेरे को बस डायरेक्टली रिप्लेस करनी है। ओके, तो एस बॉक्स इनवर्स एक और सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, जस्ट इसका पर्पस ओरिजिनल एस बॉक्स को रिवर्स करना होगा। तो एस बॉक्स सॉरी एस बॉक्स इनवर्स में ith लोकेशन एस बॉक्स डॉट फाइंड होगी। ओके, तो अब जब मैं ये एस बॉक्स इनवर्स फिर से अप्लाई करूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने एस बॉक्स एक अप्लाई किया था। ओके, लेट्स से मैंने एक और आउटपुट वन नाम का एक और एरे लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आउटपुट एरे में से एक-एक वैल्यू उठाऊँगा और एस बॉक्स इनवर्स अप्लाई करूँगा।
what was just give me a second, like I have used the wrong function. यार लिस्ट में क्या होता था सर्च करने का? ओके इंडेक्स, ओके ओके, इट वाज इंडेक्स। तो अभी जब मैंने इसको अप्लाई किया, I think I just did something wrong. Okay, so okay, actually it was taking a bit time, like my time complexity for this solution is not good because actually I'm looking for the value again and again. I should have used maps here. यार कुछ एरर दिख रही है कोड में? या आउटपुट 1 डॉट अपेंड करना है और Okay, लाइन okay, 277 output 1 dot append. ओके ओके गॉट इट। अरे एक्चुअली मैंने ऊपर वाला कॉपी किया था, तो मेरे को आउटपुट 1 में अपेंड करना था। वो एक्चुअली लूप मेरा आउटपुट पे चले जा रहा था, तो मैं आउटपुट में और वैल्यूज डाले जा रहा था, वो कभी रुक नहीं रहा था, इनफाइनाइट लूप हो गया। इन्फिनिट लूप बन गया था। ओके सो हाँ, नाउ आई हैव, ये मेरा एस बॉक्स के बाद आउटपुट आया, ये मेरा एस बॉक्स इनवर्स ऊपर वाले पे लगा, तो मेरा आउटपुट आया। ओके अभी ये देखना है कि कैसे पता चलेगा कि करेक्ट था या नहीं। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट की जगह हम उसका बाइट्स नोटेशन प्रिंट कर देते हैं। बाइट्स फंक्शन जस्ट उसका बाइट्स का ऑब्जेक्ट बनाएगा और मेरे को बाइट्स फॉर्मेट में दे देगा। ओके तो दिस वाज द सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म, नाउ दिस इज द अगेन inverse substituted form and I am getting the original text again. Okay so like got it? किसी को कोई डाउट है इसमें? I will share the code. Same with permutation, but परम्यूटेशन में बेसिकली क्या मतलब है परम्यूटेशन का, पी बॉक्स का? सो पी बॉक्स में जैसे 216 इज एट माय 0th इंडेक्स, सो व्हाट आई विल डू, the value which is at the 0th index, okay, I will pick it up and put it at the place of 216. I will pick it up and put it at the index 216. Okay so in permutation particularly, whatever is the size of my p box should be the size of my text. Okay this text will not work like in my p box I am using values from 0 to 255. Okay but this text will not work for it. I should have exactly 256 values in it, which is the size of p box. Okay um, so for this p box I will not like choose any text, any 256 bytes text. Okay just I am giving this, you can say a practice assignment, or you can try it on with your own hands. Okay like I will not be demonstrating this thing. What you have to do, I will give you this p box value of this p box. So what you have to write is a script so that you can permute this text. Okay just replace it with your text, any 256 bytes text. Okay just replace it and perform a permutation on it, and also try to calculate an inverse permutation of it. The same way we perform the substitution here, the same way you will also be performing permutation here. Okay not exactly same way, but what happens in s box, you can calculate its inverse, right? In permutation also you can also calculate the p box inverse. Whenever you will apply that p box inverse again, you will again get the initial value. Okay so like you guys got it right? uh,
तो किसी को डाउट तो नहीं कैसे करना है, ये खुद से ट्राई करके देखना सबको। तुम में से कोई एक बार समझा दो कि क्या क्वेश्चन क्या बोला उसने करने को, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई समझा सकता है कि वो क्या करने का बोला है यश ने? अगर कंफ्यूजन है तो एक बारी कोई एक बोल दो, मैं फिर से बता दूंगा। तो भैया जैसे लास्ट टाइम सब्स्टिट्यूशन करा था एंड देन हमने आउटपुट प्रिंट करा था एंड देन इनवर्स यूज करके आउटपुट 1 प्रिंट करा था जो ओरिजिनल टेक्स्ट था हमारा, तो वो यहाँ पे परम्यूटेशन यूज करके करना है। राइट, हाँ, मतलब परम्यूटेशन करना है। ओके, एक और एक्चुअली परम्यूटेशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। मैंने यहाँ लिंक अटैच किया क्या? नहीं, ओके। परम्यूटेशन, ओके, विकिपीडिया पे इसका तुम्हें आर्टिकल मिलेगा। परम्यूटेशन बेसिकली, ओके, नोटेशन। ओके, सो परम्यूटेशन इज बेसिकली साइक्लिक। तुम एक ही परम्यूटेशन को रिपीटेडली मल्टीपल टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स, इट कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी एनीथिंग, अप्लाई करोगे तो एक्चुअली परम्यूटेशन इज साइक्लिक। मतलब repeated permutation of something will give its own inverse. This is noted in this cyclic notation. Okay, like you can read about this cyclic notation. What basically we do here is, we have multiple cycles in a permutation. For example, यहाँ पे एक cycle है 2 5 1 4 3. तो पहली साइकिल की लेंथ 3, अगली साइकिल की लेंथ 2. ओके, इन दोनों का एलसीएम 6. सो एवरी सिक्स्थ परम्यूटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर परम्यूटेशन, आई थिंक दिस इज द सेम परम्यूटेशन। तो अगर यही वाला परम्यूटेशन अगर मैं 6 टाइम्स अप्लाई करूंगा किसी भी चीज़ पे, तो मेरे को ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। सो परम्यूटेशन, रिपीटेड परम्यूटेशन इज इट्स ओन इनवर्स। ओके, that thing you guys can also read upon here. Wikipedia cyclic notation permutation, you can read it about it. Okay, I think I have explained for that those part. Okay, Saksham will be explaining you modes of operation from now. Am I audible? Yeah, you are. Okay, so now we'll be covering modes of operations. So like Bhaiya ने explain कर दिया है कि what are the internal workings of the AES encryption system. So अब हम internal workings पे इतना focus नहीं करेंगे, as much as we'll focus on what's going on at the macro level. So जितनी भी working अभी तक भैया ने बताई है, that all you can assume is that in that block cipher encryption box you can see. So now we'll be only dealing with the big blocks. We won't like concern ourselves कि अब उस ब्लॉक के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, कितनी कीज बन रही हैं. We'll just concern ourselves with the outside look of it. So first mode of operation is the ECB mode of operation or the electronic code book. ये probably सबसे simplest operation है out of all the AES operations, and अब obsolete है एकदम, अभी जैसे कि बाद मालूम पड़ेगा क्यों है. So the message is divided into blocks as usual in block ciphers, and it is passed separately into this block cipher encryption mode, which is denoted by the box there, and the key that we known that the key that is unknown from us. So each plain text gets encrypted independent of the like previous plain text blocks. So first block gets encrypted, second gets encrypted, and third gets encrypted with no relationship whatsoever to the previous blocks. ये सब self-contained blocks बनेंगे ciphertext के, which will be totally independent from each other. Next slide. Okay, so I will actually just give a brief intro about the Python library. I will write it about it. It is called PyCryptodome. You guys can install it using the command pip install PyCryptodome. Okay, so I will just quickly I think, okay, so the code is very much self-explanatory. Okay, Saksham, you can go now. Okay, the code is pretty much self-explanatory. You import the AES module from the crypto.cipher
modules, you import the AES function. The first function I've written is AES encryption, and the second one is AES decryption. One thing to remember, like the way I've written these functions at least, is it will take in bytes and not strings. So I will explain how to convert to a byte string later on. But for now, remember that input in functions में byte string जाएगा instead of your ASCII strings. So in the AES encryption function, you can see I've also checked whether the like length of the input bytes is a multiple of the block size or not. If it is, or if even if it isn't, maybe my function is a little faulty, you have to pad it no matter what. And then you define a new object known as AES.new with the key bytes which are given, and then you encrypt them. And what you will get is also a byte array. And the key that this module works majorly on byte strings only. So even if you like enter a regular string, it will just give you an error. And the same thing is with the decryption function. So either you can take a screenshot of this or write it yourself. This is pretty easy actually, and GFG or Google पे search करोगे तो आराम से मिल जाएगा. Next slide भैया. एक चीज एक्चुअली यहाँ पे सक्षम ने ये कोड लिखते हुए मिस करी. उसने पैड केवल तभी किया जब वो ब्लॉक साइज का मल्टीपल हुआ. लाइक हम यहाँ पे ब्लॉक साइज का मल्टीपल नहीं हुआ. जब वो ब्लॉक साइज का मल्टीपल हुआ उसने पैड नहीं किया. एक्चुअली पैडिंग हमेशा रिक्वायर्ड होती है, जो मैंने बताया था. इवन इफ यू हैव अ मल्टीपल ऑफ प्लेन टेक्स्ट, इवन यू हैव प्लेन टेक्स्ट एज अ मल्टीपल ऑफ ब्लॉक साइज, यू विल अगेन हैव टू पैड. पैडिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. इसलिए बोलते हैं कि कभी अपना क्रिप्टो कोड नहीं लिखना चाहिए. जो लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती है ना, उन्हीं को यूज करना चाहिए. ऐसी गलतियां होती है, फिर अपनी प्रॉब्लम्स पे आप दिन लगाते रहते हो, सर पटकते रहते हो, मालूम पड़ता है यार एक लाइन मिस कर दी इधर मैंने. ऐसा ही होता है. तो इसलिए डेवलपर्स हमेशा कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज हैं, यू शुड ऑलवेज यूज देम. डोंट रोल योर ओन क्रिप्टो. Like this is a mantra between all the cryptographers out there. So I previously said that ECB is vulnerable because there's a lack of diffusion. As I said, like if you take the same plain text and you encrypt it using the same key multiple times, you'll always get the same ciphertext. So like you can see in this image, so say if you were to focus on the black parts of this image, so one black part of the image is totally indistinguishable from the other black part, right? So since the encryption is independent of each other, those black parts when encrypted will give the same encrypted bytes. So although the color will be totally messed up, it will clearly show where the colors are equal. So all the black parts will get encrypted similarly. So there will be a pattern, like a pattern between similar data types will always be visible. So you can see in the picture that all the black part of the image is more or less visible in the encrypted ECB mode image also. That's because the same things get encrypted to the same ciphertext. In this case, the same pixels. Although the color is totally messed up, patterns are obviously visible. And now here अब CBC की entry होती है. CBC is like a totally different beast, just because एक simple सा operation extra add कर दिया गया है. So CBC is known as cipher block chaining. So the only difference between this and the ECB mode जो मैंने पहले दिखाया था is that this initialization vector and the fact that every time you encrypt your plain text blocks here, say you have this plain text block, the first one. What's going into this block cipher encryption box is not the plain text which you have entered here. It's this plain text XORed with the XORed with the initialization vector. So these two get XORed and this enters into the block cipher encryption and that gets encrypted. And the ciphertext that you received, that gets XORed to the next plain text block. So what enters this second block cipher encryption isn't the second plain text block, but XORed version of it, like ciphertext block 1 XORed with the plain text block 2. Now you can obviously see कि initialization vector का need क्यों होता है, because plain text block 1 से पहले कोई ciphertext block है ही नहीं, so that's something you have to define yourself, right? So it has to be taken care that it's totally random and it's not known. अभी एक simple सी exercise हम आगे बताएंगे जिसमें you'll know कि how to calculate the initialization vector when you don't really have access to it, and but you have an access to an encryptor and decryptor. Okay, so actually one thing I wish to add, like many beginners confused with this thing, is that IV and key should be
independent, and random. Another important point is only key is the secret. IV is not a secret. I mean, if someone has to wants to decrypt it, like as you can see here, uh, all the other blocks can be decrypted, but for the first block to be decrypted, you need the IV. Okay, so IV is not the secret. Okay, IV can be public, but not to be used. But don't use same value again and again. Okay, that is it. So what basically happens is sometimes in many implementations, uh, I think in PyCryptodome is also not in PyCryptodome. In some implementation, it happens is that uh, when you will send someone the ciphertext, okay, you will also send the IV with it. So what you will send, IV concatenated with the ciphertext, and then you will send it to someone. Okay, so that is also one thing like you should remember that IV is not a secret. Only key is the secret. IV should be known in order to decrypt it. And IV uh, is very much safe to share the IV. It is not at all unsafe. Okay, so this is the explanation of the previous one. Okay. No section. Please go on. So as I said, like एक भाई वो summarize कर देता हूँ last slide जल्दी से. So every plain text block is chained to the previous ciphertext block by the exclusive OR operation. Like byte strings are XORed with byte strings. So that is something I will explain in the detail that I'll take in the forward slides. This takes care of the diffusion vulnerability from ECB. Like patterns will not be visible now because each ciphertext block is now related to the previous plain text block. Like that was not the case before. Like the encryptions of separate plain text blocks was totally independent of each other, but now we have taken that independence, and now there's a chaining which removes the factor which made ECB vulnerable in the first place. And we require an IV, also known as the initialization vector, to take care of the first plain text block. Usually a random 16 byte string would work, and it's usually not a problem if it's public. But if it's not, there's a very simple way to find it. And the most popular and elegant attack on this move so far is the padding oracle attack. Like I will not go into that attack very much in this. So let's move on. But it's a very like simple but algorithmically difficult attack. So now, a simple hypothetical challenge. I say hypothetical because you'll see. So say you have you have access to an AES-CBC encryptor and decryptor. So you have an encryption machine and a decryption machine. You can enter whatever cipher plain text you want, get a ciphertext, and you can have whatever ciphertext you want and decrypt it to the plain text. So you can have what you can do whatever you want to do with it. You don't have access to the key or the IV. So how can you find initialization vector with the current information that you have? So next slide. Okay, so just it's a bit refresher on bitwise OR. Okay, so for those of you are not familiar, like I think we have covered it in the previous number theory workshop, but for those of you who are not familiar with XOR, so what basically XOR is exclusive OR. When you have those values which are equal to one another, then you have zero output. Like zeros or zero is zero, one and one always gives XOR zero. Okay, if the values are not equal, then you will always get the value one. Okay, how to bitwise or two decimal numbers, you convert them to binary and operate it on individual bit, and then you can convert it back to decimal. So that is how it works on decimal values. For bit strings, byte strings basically, I should say, this ABC is a byte byte string, XYZ is a byte string. Okay, I want to apply bitwise OR on them, so I will just represent them into their ASCII value notations and apply the XOR operation on each decimal value as I have explained above. How will I explain? How will I operate it on the decimal values? So the similar way I will operate in on them, and I will again get an array of values, and I can just again reverse it back. Like
एज आई रिवर्स्ड इट हेयर, मैंने यहाँ पे इसको ऑपोजिट इन्वर्ट किया था बाइनरी से डेसिमल में. सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी. मैंने एरे में मेरे पास वैल्यूज आई, मैंने उसको वापस स्ट्रिंग नोटेशन में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग या बाइट नोटेशन. और ये हेक्साडेसिमल यहाँ पे वैल्यूज लिखे हैं. ओके, पाइथन में या C++ में इसका ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. और एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज और की, इट इज़ इन्वर्टेबल. ओके, तो यहाँ पे जैसे तुमने देखा कि प्लेन टेक्स्ट और आईवीज और हो गए. ओके, साइफर टेक्स्ट आया यहाँ पे. ये एनक्रिप्शन का इनवर्स प्रोसेस डिक्रिप्शन. ओके, इस साइफर टेक्स्ट को मैंने जब इस डिक्रिप्शन ब्लॉक में डाला तो डिक्रिप्शन ने मेरे को प्लेन टेक्स्ट और आईवी दोनों का जोर आया. ठीक है, अब मेरे को प्लेन टेक्स्ट निकालना है तो मैं आईवी से फिर से जोर कर रहा हूँ. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जोर ऑपरेशन बेसिकली इन्वर्टेबल है. लाइक ये 3 इक्वेशन लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कैसे इन्वर्टेबल है, और कॉम्यूटेटिव भी है. तो मैं ए जोर एक्स, एक्स जोर ए कुछ भी लिख सकता हूँ. ओके, अनदर थिंग, जीरो के साथ जोर हमेशा सेम वैल्यू देता है. यहाँ पे एग्जाम्पल है, जीरो के साथ जोर हमेशा सेम वैल्यू देता है, और वन के साथ हमेशा फ्लिप कर देता है. ओके, सो अगर मेरे पास एक इनपुट में सारे बिट्स अगर वन है तो मेरे आउटपुट में सारे बिट्स फ्लिप हो जाएंगे. अगर इनपुट में सारे बिट्स जीरो है तो आउटपुट में सेम बिट्स आएंगे. ओके, जस्ट अ रिफ्रेशर. ओके, ओके, सो दैट चैलेंज सक्षम वाज एक्सप्लेनिंग. Okay, so I just said that we have to XOR two strings. So अब actually जब दो strings को XOR करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ जल्दी से. Like we cannot XOR them directly. Like भैया ने last slide में बताया, we need them. We first need them in the bytes version. So you can do that with the encode inbuilt function that Python has. So when you apply dot encode on blocks, you get B and the string in double quotes. So that B means that it is in the byte version. And this is equivalent to this list that I've written here, where each number specifies in order the ASCII value of its corresponding character. Like B ka ASCII value 98, L ka 108, O ka 111, and so on. And similarly with public.encode, तो इसका भी हमें ये byte version, which is equivalent to this list number version. So when you XOR these two strings, what you're essentially doing is you are taking each term, iterating through each index of the list, and उनको XOR कर रहे हो separately, and then you are like appending it to a final list, which is like this I've given in the final list that's given. So that's what you get when you XOR two strings. But I've taken care here कि जो दोनों strings हैं, like they're of the same length, because like in AES you don't really get to XOR two strings which are of the different length. तो वो case यहाँ पे necessary है नहीं. Next line. Okay, so the same problem, like if you guys have forgotten it, we are given an encryptor, a decryptor. Okay, we can request anytime encryptor to encrypt anything. We can request decryptor to decrypt anything anytime we request. The challenge is to find the initialization vector or the IV. So to find the IVs, like this is a, like not even a problem. This is just a small trick that I'm like implementing here to बताने के लिए कैसे actually system में काम चलता है. So मान लो कि we input this null string that we have here. It's just 0, 0, 16 times. It's just a 16 byte long null byte string. Null byte meaning सारे bytes इसके 0 हैं. तो भैया एक बार वो diagram पे जाना CBC का. No, okay. So मान लो कि we took 16 null bytes, right? So in the top encryption diagram, you can see if I put 16 0 bytes in there, so what will actually go into the block cipher encryption? It won't be the 0 bytes. It will be IV, which we don't know, XOR'd with the plain text 0 bytes. So since सारे bytes 0 हैं, so IV XOR with plain text block 1 will give you the IV only क्योंकि you are XORing it with 0. It doesn't make any difference. So what is actually going into the block cipher encryption is just the IV. And what you will get in the cipher text below is just its ECB encrypted version. Because remember, I told you the blocks which are here, block cipher encryption, and the blocks which were there in the ECB, they're totally the same. The only difference between these two is this chaining operation that's there. So now we have got this ciphertext, which we have like the IV which passed through the block cipher encryption gave us this ciphertext. And now, मान लो कि we really didn't use a plain text block 2 here. But मान लो, we put this ciphertext that we got, हम इसी को वहां पे डाल देते हैं.
So whatever ciphertext we got here, we put it exactly in this plain text. So what will happen now? कोई बता सकता है कि second blocks of encryption में क्या input जा रहा है actually? Anyone? ओके, सो लाइक ये पार्ट क्लियर था ना जो अभी यहाँ पे बताया कि हमने जब प्लेन टेक्स्ट को जीरो डाला और हमने आईवी के साथ उसको जोर किया, तो जैसा मैंने बताया कि जीरो के साथ जोर करने में सेम वैल्यू आती है। तो बेसिकली हम इन दो फंक्शंस का यूज़ करके, हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, हम ऊपर के प्लेन टेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आउटपुट में हमें साइफर टेक्स्ट मिलेगा। हम नीचे वाले बॉक्स में साइफर टेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं, हमें आउटपुट में प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। तो हमें इन दोनों का यूज़ करके इस पर्टिकुलर इन दो फंक्शंस को हमें हमें आईवी सेंड करवाना है। मतलब इन दो फंक्शंस को हमें डेटा इस तरह से मैनिपुलेट करके देना है कि वो हमें आईवी भेज दे, ठीक है। तो दैट इज हाउ लाइक बेसिकली यू हैक क्रिप्टो सिस्टम्स, यू मैनिपुलेट सिस्टम्स टू योर एडवांटेज, ओके। तो हमने जब प्लेन टेक्स्ट में जीरो भेजा तो हमने उसके साथ आईवी के साथ जोर हुआ, तो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो हमें आउटपुट में जब इनक्रिप्ट हुआ तो हमें साइफर में इनक्रिप्शन ऑफ आईवी मिला, इनक्रिप्शन ऑफ इनिशियलाइजेशन वेक्टर ओनली, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमारे पास आईवी का एनक्रिप्टेड फॉर्म है, ओके। हम आईवी का डिक्रिप्टेड फॉर्म चाहते हैं, तो हमें आईवी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आईवी का डिक्रिप्ट कैसे करवाएंगे? एनी आइडिया? लाइक तुम्हें ये नीचे वाला फंक्शन दिया है, तुम्हें आईवी का एनक्रिप्शन दिया है, तो हम आईवी का डिक्रिप्शन कैसे करवाएंगे इससे, इस नीचे वाले फंक्शन से? फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने साइफर ब्लॉक 1 में अगर तुमने आईवी का एनक्रिप्शन दिया तो आउटपुट में डिक्रिप्ट करके आईवी का डिक्रिप्शन आएगा जो कि आईवी होगा। वो एनक्रिप्ट जो एनक्रिप्टेड फॉर्म था आईवी का, उसका डिक्रिप्शन आएगा जो कि आईवी होगा। और आईवी को आईवी के साथ जोर करोगे तो आउटपुट में प्लेन टेक्स्ट में जीरो आ जाएगा जो कि हमने इनिशियली डाला था। तो हम इस नीचे वाले कंस्ट्रक्ट से आईवी की वैल्यू कैसे डिराइव करवाएंगे? हम एनक्रिप्टेड आईवी को डिक्रिप्ट कैसे करवाएंगे? और हमें आउटपुट में आईवी चाहिए ओनली। एनी आइडिया? गलत आंसर भी चलेगा, इट्स नो इश्यू, गेस कर दो, कोई इश्यू नहीं है। लाइक इट्स जस्ट अ लॉजिकल क्वेश्चन। एनीवन? यस, कोई ये कह दो कि साइफर टेक्स्ट को डायरेक्टली इसमें डाल देंगे, कोई इश्यू नहीं, सर करेक्ट कर देंगे हम। ओके, आई थिंक लोग कंफ्यूज हो गए। तो प्रॉब्लम समझ आया था सबको? एक ने चैट में लिखा साइफर टेक्स्ट में जीरो पास करके। साइफर टेक्स्ट में जीरो पास करके, ओके, ऑल राइट। तो तो साइफर टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल हमने जीरो पास किया, ठीक है। तो हमें हाँ, मतलब लाइक यू आर पार्शियली करेक्ट एक्चुअली। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा ब्लॉक्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इनक्रिप्शन के टाइम पे एक ही ब्लॉक इनक्रिप्ट किया था, ठीक है। बट हम डिक्रिप्शन के टाइम पे हम दो ब्लॉक्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ वन। तो तुमने बताया जीरो पास करेंगे, तो ये मैंने हिंट दिया, हम दो ब्लॉक्स यूज़ करेंगे। तो सेकंड ब्लॉक में हम क्या पास करेंगे? ओके, तो हमें जो यहाँ पे आउटपुट में ये वाला साइफर टेक्स्ट आएगा, हम यही साइफर टेक्स्ट को सेकंड ब्लॉक में पास करेंगे, ओके। और ये पहले वाला साइफर टेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं जो हमारा मन करे, ठीक है। क्योंकि लाइक अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने सेकंड ब्लॉक में एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ आईवी डाला, ओके। हमें आउटपुट में इस डिक्रिप्शन ब्लॉक के जस्ट नीचे हमें आईवी मिल जाएगा, राइट। और ये पहले वाले ब्लॉक का साइफर टेक्स्ट तो हमारे हाथ में है, लाइक वी कैन कंट्रोल इट, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला साइफर टेक्स्ट ब्लॉक हमने कुछ भी फॉर एग्जांपल रैंडम हमने डाल दिया, तो हमें प्लेन टेक्स्ट में क्या मिलेगा? आईवी इज ऑर्ड विद समथिंग रैंडम, और वो रैंडम हमें नोन है क्योंकि हमने तो भेजा है। तो हम उसके साथ फिर से जोर करके आईवी निकाल सकते हैं। एंड वन मोर ट्रिकी पार्ट, वन मोर सिंपल थिंग वी कैन डू इज, ये साइफर टेक्स्ट को सारा जीरो भेज सकते हैं पहले वाले साइफर टेक्स्ट को, तो आउटपुट में हमें आईवी ही मिल जाएगा। तो सेकंड प्लेन टेक्स्ट का सेकंड ब्लॉक इज आईवी एक्चुअली। हमें पहले ब्लॉक का यूज नहीं कर सकते हम क्योंकि यहाँ पे वो एक अननोन वैल्यू के साथ जोर कर रहा है, ओके। बट सेकेंड ब्लॉक वी कैन यूज बिकॉज पहले ब्लॉक की वैल्यू हमारे कंट्रोल में जो कि नोन है, सो वी कैन बेसिकली यूज अ सीबीसी encrypted decryptor pair
to actually make it spit out the value of IV, which is not known to anyone before. So what we just had to do, we first encrypted something, and we just then send a custom payload in decryption, and so that way we actually got the IV value. Actually we हमें प्लेन टेक्स्ट को जीरो भेजने की भी जरूरत नहीं, हम कुछ भी भेज सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने प्लेन टेक्स्ट कुछ भी भेजा, हमें आउटपुट में आई विज ऑर्ड दैट प्लेन टेक्स्ट आया. ओके, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में जो भी आ रहा है, हम पहले साइफर टेक्स्ट में वही सेम टू सेम प्लेन टेक्स्ट डाल देंगे, जो ऊपर डाला था वही सेम प्लेन टेक्स्ट इधर, और सेकंड साइफर टेक्स्ट में इसका आउटपुट, पहले वाले ब्लॉक का आउटपुट एनक्रिप्ट करके जो आया था. तो हमें आउटपुट में प्लेन टेक्स्ट में बेसिकली आईवी मिलेगा हर बार. समझ आया? लाइक मैं इक्वेशंस लिख के बता सकता हूँ इसकी, किसी को डाउट? ओके, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया समझना, बट लाइक यहाँ पे पूरा ये यहाँ पे पूरा डिक्रिप्शन का थोड़ा सा ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो लाइक यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से रीड करना, समझ आ जाएगा बाकी आगे का. ओके, ऑब्वियसली इस एक चीज और, उस आंसर के मतलब वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं. यू कैन ऑब्वियसली हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस. लाइक ये मैंने अपनी तरफ से जो मुझे पहले दिमाग में मैंने लिख दिया. if you're getting something else, you can just try it. Like मैंने कोड तो दिखाई दिया already कि how to implement encryption decryption. You can just try it yourself. like you can use this, we have actually used the pycryptodome library. This crypto function, crypto module is from pycryptodome. I think विंडोज में इंस्टॉल करने में एरर्स आएंगी, तो लाइक बता सकते हो वो एरर्स वगैरह शुरू में आती है इंस्टॉलेशन में. ओके, सो here is the CTR mode, and like there is not much to explain. Like, you can read more about it later This on. is just Zor mode trying to be cool. Try to be cool और कुछ नहीं उस mode में. Yeah. Actually, we basically use the CTR mode right now. For example, we are right now communicating. We are not using the CBC mode. CBC mode is generally used to encrypt files. CTR mode is basically a modified version of CTR mode called GCM mode is used. You can read about it like in the book or in any online article. Like we are running out of time. I will just we are planning to give a basic, very slight introduction to public key cryptography. This will not be too much. Like the math can be a bit hard, but like you guys can try it on pen and paper later on. So what basically a public crypto system is, very broad, very brief intro. You have two keys, public key and private key. Bob wants to send a message to Alice, but he wants to first encrypt it. So he will take the Alice's public key. Okay, corresponding private key is only known to Alice. Bob does not know private key, वो उसको पता नहीं है. तो क्या करेगा, एलिस की पब्लिक की लेगा, उससे इनक्रिप्ट करेगा, एलिस को भेजेगा, जिसको डिक्रिप्ट केवल एलिस ही कर सकता है, क्योंकि एलिस के पास ही वो प्राइवेट की है. ओके, सो दिस इज बेसिकली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. यही सिंपल सा है. तो यहाँ पे इसको हम डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी यूज़ करते हैं. डिजिटल सिग्नेचर में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्चुअली ये कीज़ जनरली इन्वर्टेबल होती हैं. जो मैसेज पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ है वो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होता है, जो प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ है वो पब्लिक की से डिक्रिप्ट होता है. तो फिर फॉर एग्जांपल एलिस ने एक मैसेज प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया और वो एलिस की पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो पा रहा है. इसका मतलब है कि हम ये एश्योर कर सकते हैं कि वो मैसेज एलिस नहीं भेजा था, क्योंकि उसको डिक्रिप्ट कर पाने के लिए उसकी प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट करना ज़रूरी है. तो दिस इज फॉर्म ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर. ओके, डिजिटल सिग्नेचर यू कैन रीड अबाउट इट लेटर ऑन, और मे बी आई विल शेयर समथिंग अबाउट इट. Okay, so one common algorithm is RSA we use in public key cryptography. This is basically the math of it. So like this math is, I don't think like it will be very good to explain it right now. We have also so what basically RSA is, depends upon is Euler's Totient function, and the Euler's theorem, if you have studied it in the number theory part,
like I will actually just skip up on this. Just tell you how we basically implement the RSA, okay, with an example of values. So RSA is actually based upon the factorization problem. You cannot factorize two numbers, a number into two parts, p and q. P and q are very large prime numbers. For example, RSA, we generally use the standards 1024 2048. 1024 stands for 1024 bits, which is about um, around 360 digits in decimal. So that is a very big number. We cannot factorize it unless we already have knowledge of p and q. Okay. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास m है, m मैसेज है, ओके, हम इसको एनक्रिप्ट करना है. तो व्हाट वी विल डू, हम पहले एक n कैलकुलेट करेंगे. इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, ओके, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं. ओके, दिस इज द phi of n और quotient फंक्शन. ओके, तो हम ये टोशेंट वैल्यू निकालेंगे n की. ओके, p माइनस वन क्यू माइनस वन, ये लाइक यू कैन रीड इट लेटर ऑन की क्यों होती है ऐसे. सो व्हाट बेसिकली टोशेंट फंक्शन स्टैंड्स फॉर इज उस नंबर से छोटे कितने नंबर्स को प्राइम है. फॉर एग्जांपल n से छोटे 1 से लेकर के n तक कितने नंबर्स n के साथ को प्राइम है, तो वो वैल्यू ये है. ओके, फिर हम कोई भी एक e चूज करते हैं. ओके, फिर ई इस तरह से चूज करना है कि वो फाई के साथ में उसका जीसीडी वन, लाइक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आफ्टर स्टडिंग सम मैथ यू कैन रियलाइज इट. फिर उसके बाद हम मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन करते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा मैसेज है. ओके, आई थिंक दिस शुड बी 12. ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम m की पावर ई मॉड n सॉल्व कर रहे हैं. ओके, m इज 12, 12 की पावर 11 मॉड 1073. 1073 हमारा मॉड्यूलस है. ओके, तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 1032. दिस इज साइफर टेक्स्ट. ओके, और साइफर नंबर यू कैन से. दिस थिंग वी विल सेंड टू समवन, ओके, जिसके पास इसकी डिक्रिप्शन की है. ई इज द इनक्रिप्शन की और द पब्लिक की. नाउ वी वांट टू फाइंड डिक्रिप्शन की. डिक्रिप्शन की किस तरह से फाइंड करते हैं हम. डिक्रिप्शन की ऐसी होती है कि ई मल्टीप्लाइड बाई डी. डी इज द डिक्रिप्शन की, जो कि फाइव के साथ में मॉड्यूलो करके वन आउटपुट दे. ओके, यहाँ पे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम यूज होता है, जिससे कि हम मॉड्यूलर इनवर्स सॉल्व करते हैं. तो जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व करेंगे इसे, तो हमारी डी की वैल्यू 275 आएगी. तो जब हम 275 साइफर टेक्स्ट की वैल्यू जब हम वो डालें, उसकी पावर डाल के मॉडर्न सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज आएगा. ओके, सो लाइक आई हैव वेरी क्विकली एक्सप्लेन्ड इट टू यू वेरी ब्रॉडली व्हाट आर द स्टेप्स. इसको तुम पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. पाइथन में या फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक किसी को समझ नहीं आया, लाइक किस किस को नहीं पता टोशन फंक्शन क्या होता है, या मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, या एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम किसको नहीं पता, किस किस को नहीं पता यहाँ पे. सेफ टू अज्यूम भैया किसी को नहीं पता शायद तो. ओके, तो लाइक हमने इसलिए नंबर थ्योरी की वर्कशॉप में कवर करा था वैसे. ओके ओके, लाइक स्टिल अगर कुछ लोगों को नहीं आता हो, तो ये वर्कशॉप 1 की स्लाइड्स हैं यहाँ पे, पिछली वर्कशॉप की, वर्कशॉप 2, तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम देयर. ओके, एंड आरए से हेवीली डिपेंड करता नंबर थ्योरी पे, तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा नंबर थ्योरी. और लाइक और एक्चुअली आरएसए से अब आजकल बेटर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स यूज होते हैं, एलिप्टिक कर्व बेस्ड क्रिप्टोग्राफी. तो एलिप्टिक कर्व्स और भी ज़्यादा नंबर थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे बेस्ड हैं. तो लाइक वो सब हम कवर करना पॉसिबल नहीं, इसके लिए काफ़ी डिटेल्ड जाना पड़ता है, बट लाइक यू कैन स्टडी अबाउट इट लेटर ऑन व्हेन यू आर प्रो विद आरएसए. ओके, मैं बस एक स्केल के लिए बात करना चाहता हूँ कि लाइक मे बी यू डोंट गेट इट नाउ, बट like the security of RSA depends on whether you can factorize the modulus or not. So like अभी जो हमने एग्जांपल लिया, it's just like 2 digit numbers, like ये तो brute force अभी हो जाता है, या पेपर पे करने बैठो हो जाता है. बट एक्चुअल में अगर आप
जो आपके नॉर्मल सर्टिफिकेट्स हैं जो कि वेबसाइट्स यूज करती हैं या कंपनीज यूज करती हैं, कंपनीज RSA यूज ही नहीं करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी यूज करती हैं, जो कि अलग चीज़ है एकदम। बट उनका जो, मैं बस एक सेंस दूं तो उनके जो मॉडुलस होते हैं दे आर 600 to 1000 डिजिट्स लॉन्ग। पेन पेंसिल से नहीं होंगे फैक्टराइज, कंप्यूटर से भी नहीं होते। लाइक करंट CPU ट्रेंड के अकॉर्डिंग thousands of years लग जाएंगे उनको फैक्टराइज करने में। Like more than the age of the universe, safe to say, which is inconvenient. So like problems के लिए you can visit cryptohack.org, like very good set of problems you can find there from beginner to advanced, everything is there. Okay, just to give a sense of how big uh, I can say RSA keys are. Okay, like section, what was the module name? Like I forgot. Okay. Just to give किसी you को, हाँ हाँ बोलो। just to give you a an estimate of how long the keys are. Okay, so here I have generated an RSA key of 1024 bits. So let's say I am printing the value of its n. This is the modulus. Okay, and this is these are the prime numbers which are actually used in RSA. So this is actually the magnitude of RSA works. Okay, at which the RSA 1024 is one of the numbers. Like uh, generally in bank security encryptions we use 2048-bit security. Okay, so those numbers are this much big. Okay, so we literally cannot factorize these numbers. Like uh, there is an algorithm based on quantum computers that can factorize it, but we are still very much far away from that. Okay, like we are done, guys. हाँ, नेक्स्ट वर्कशॉप में हम RSA के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, तो उससे थोड़ी वर्किंग समझ में आ जाएगी। अभी उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड यश ने समझाया है। और किसी को हेक्स कोड और जो शुरुआत में बाइट्स के ऊपर बात चल रही थी, अगर वो समझने में प्रॉब्लम हुई थी, तो लास्ट वर्कशॉप के आखिरी में क्रिप्टोपाइल्स करके एक वेबसाइट के बारे में बताया था, तो तुम उसको विजिट कर सकते हो। उसका सेट 1 में काफ़ी अच्छे से हेक्स कोड के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से वहाँ से समझ में आ सकता है। और यश कुछ ऐड करना हो? नहीं, मतलब लाइक देर इज अ लॉट। लाइक अभी तुम cryptohack.org खोलोगे, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। लाइक हमने जो ये IV निकालने का जो हमने अभी जो ट्रिक बताई थी, दिस इज लाइक वन ऑफ द प्रिमिटिव ट्रिक्स। मतलब ये चीज़ कोई पूछता भी नहीं किसी CTF में, इतना आसान है। देर आर लिटरली वेरी लॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो लाइक जब तक यू विल हैव टू एक्चुअली ट्राई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। विदाउट ट्राइंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। CBC का टेस्ट तो तब आएगा जब पैडिंग और एकल खुद से लिखोगे। हाँ, पैडिंग और एकल, लाइक मेरे को सीखने में 2 से 3 हफ्ते लगे थे। लाइक दो हफ्ते लगे थे। लाइक मैं उसका इनिशियली मैं उसका कोड नहीं लिख पाया था बहुत टाइम। एक मुझे कोड लिखने में 1 हफ्ता लगा, क्योंकि मैंने 5वें दिन पे रियलाइज किया मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। मेरी 5 दिन की मेहनत गई थी इसमें। एंड वन मोर थिंग, लाइक अभी तुम्हारे थोड़े बहुत हम CTF प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे। लाइक वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग CTF कॉन्टेस्ट, कॉप्स सिक्योरिटी टीम। सो what we will be organizing is the Udyam Spybits CTF contest, and another one will be the Technic CTF. Okay, so